लक्ष्मण भाई, राधे 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 राधे। लक्ष्मण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। चले गए क्या? हम ऐसे आपको देखते हैं, बोलते हैं, आप चले जाते हो तो कमेंट करो। राधे 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 राधे। लक्ष्मण भाई, कल लाइव नहीं चलाए क्या आप? कल आपको लाइव में नहीं देखा मैंने। कल लाइव नहीं चलाए थे लक्ष्मण भाई, कमेंट करें। आप मुझे पिन पर नहीं रख देते हो, मैं कमेंट करती हूँ वो भी नहीं पढ़ते हो, और मैं ज्वाइन करती हूँ तो कोई रिटर्न नहीं करता है आपके लाइव में। तो क्या करे बोले? ज्वाइन करती हूँ तो रिटर्न नहीं देता है, आप पिन पर नहीं बैठाते हो, तो हमको कैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा? राधे 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 राधे। लक्ष्मण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच। कैसे हो? कमेंट करो ना, कमेंट। कमेंट नहीं आ रहा है। कल लाइव नहीं चला है क्या? राधे 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 राधे। हंस रहे हो लक्ष्मण भैया, हंस रहे हो।
सुखी जीवन। राम 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 दीदी, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच लाइव में आने के लिए, धन्यवाद। कैसे हो दीदी, खाना पीना हो गया? बबीता जिंदाबाद। मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? राधे 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 राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल शाम को मैंने एक वीडियो डाली थी प्रवेश के, कोई वीडियो अपने चैनल पर डाल लीजिए। तो वीडियो हम नहीं देखे हैं दीदी, हम चेक करेंगे। आप अपना पर रखे हैं तो प्रोजेक्ट किया है, कृपया कर आप चैनल पर डाल लीजिए। शेयर करके वो वीडियो को हम देखते हैं। वीडियो इस शिवरात्रि सभी को हर हर महादेव। शिवरात्रि वाला कल दूर दिया गाड़ी। Video so you can work between your time and मेरे चैनल पर पता नहीं, हम तो नहीं देखे। ये तो नहीं है। एक औरत के साथ मैं मेकअप का सामान दिखा रही हूँ। पर्चा आ रहता है आपके वीडियो पर, देखिए हमारे चेक कर रहे हैं तो ऐसा आता है पर्चा। हमको तो कुछ नहीं आता है दीदी, कुछ जानते नहीं है। वीडियो आप अपना चैनल पर रखे हैं ना, वहां से हमको क्या करना है? वीडियो लेकर के अपना हम अपना चैनल पर रखे करा। ये उस शॉर्ट पर वो क्या, ये शॉर्ट पर
शॉर्ट वीडियो को। ये वाला है, देखिए। इसको मैं शेयर करती हूँ अपने मैसेंजर पर। आवाज वाली जगह पर क्लिक करोगे तो आपको कॉल हो जाएगा उस पर। विवेक कुमार, राधे 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 राधे। विवेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच भाई, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आया करें मेरे लाइव में, सपोर्ट करें। मैं भी आऊँगी, देखूँगी तो। राधे राधे। आवाज वाली जगह पर क्लिक करोगे तो आपको कॉल हो जाएगा, उस पर कॉल एक का ऑप्शन आएगा। यही वाला है, यही वाली वीडियो डालनी है अपने चैनल पर आपको, मेरे चैनल पर। ठीक है, तो वीडियो को हम करेंगे पहले, वीडियो को पहले डाउनलोड करेंगे, उसके बाद हम अपना चैनल पर रख देंगे। प्रचार करानी है। वीडियो के नीचे आवाज वाली जगह पर क्लिक हो जाएगा। मेकअप का सामान सब है उसमें। ऑनलाइन करते हो क्या? ऑनलाइन होता है ना बिजनेस से। के लाइव में रोज एक दो हम देखते हैं भाई, देखते दो चार ठो ऐसे करते हो, लाइक भी कर देते हो, दो चार कमेंट देखते हैं, आते हो कभी कभी। ऐसे तो हम 2-3 बार करते हो, लेकिन आप कभी कभी आ जाते हो एक लाइव में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना फुर्सत हो उतना आए, मैं भी आऊँगी। आप रात को करते हो कि दिन को? रात में देखती हूँ कभी कभी। का आवाज नहीं आता है। अभी तो आता होगा, अभी तो लिंक नहीं है। इसी में आवाज नहीं है क्या? अब आएगा, अब आएगा। आ रहा है आवाज।
आवाज बंद था उसका। डाउनलोड नहीं करना है, मेरी डीपी को क्लिक, नीचे मेरी डीपी आ रही है, भोलेनाथ को से टच करना है, एक ऑप्शन, बस आपके चैनल पर हो जाएगा। मुझे तो नहीं आता है दीदी, रुकिए हम देखते हैं क्या करना है। शॉर्ट वाली, तो उसको शेयर शेयर करेंगे कि इसको क्या करें? ये रुक गया क्या? इसको मैं कहाँ क्लिक करेंगे? देखिए कौन ऑप्शन का को नहीं आता है दीदी। आप ऐसे कहोगे तो मैं ये वीडियो सेम टू सेम हम दूसरा मोबाइल से लेकर के आप अपना पर रख सकते हैं। और शेयर शेयर तो है, तो शेयर कहाँ से करें? ओ ओ द वीडियो को हम तो ऐसे हमको कुछ नहीं। ये वाला से हम सब्सक्राइब, इस शरद वाला से आपको सब्सक्राइब नहीं हुआ है, मैं कर देती हूँ। अब इससे भी लाइव में आऊँ, ये वीडियो को वैसे हम
दीदी हमको समझ में नहीं आता है किससे मेरे चैनल पर आएगा ये डाउनलोड करके मात्र आता है हमको। Use this song. नमस्ते सर ठिकै छ सर राम्रै छ ए सर सर राम्रो अभिभावक म अभिभावक हो र यहाँ कस्टमर सर हिजोबाट आजबाट कोचिङ सुरु गर्छ हिजोबाट फेरि 6-7 इङ्ग्लिसको क्लासमा आउने हो कि म यहाँ सरलाई थाहा छ नि हाम्रो स्कुलमा माविको दर्जनमा एउटा छ इङ्ग्लिसको म सल्लाह गर्छु सर चाहे एक सर पकड़ मिलेगा ल हुन्छ सर म एकदम जान ल हुन्छ म बुझिरहेको सर होइन सर म पनि जानलाई लडाइँ छु सर
जी मैडम आप किसी का की और बताइए कौन सा करेंगे वो कि हमरा कॉफी मेकअप सबके वीडियो जरा भेजने से हमरा कहना कमाई आपनो चैनल में सारा हमरा सारे हमर चैनल मोनेटाइज हो गए सब वीडियो बना के आप कैसे हमरा सारा नहीं आला सीधे कहो जी सारा हमरा नहीं तो हर वीडियो में क्या साल अब उन्हें साथी सब को शेयर कर सकते हैं हम मोनेटाइज ऑनलाइन से हम नंबर के जते डिलीट रहे छै कॉपीराइट सब चेक कर के तकरा बाद ऑप्शन बढ़ा ये तो नहीं अब वो तो बुझबे नहीं करै अहाँ के तो आप अरा सब बताइए मैं बताइए हमरा सब पर दो बात के कहाँ पर लिखे रखते हैं आप दोनों और ये नोटिफिकेशन ये तो है हम घरा का किसी को अपन आदमी की किसी ने देखे वो नहीं रहते तो का मान भाई ग्रास रहते नहीं मांगे तो भगवान के खाना होता है उसका बात नहीं खाना बना के उता बुती जे खाना घर हो गेले बाल खाना अपने बनाना पड़ता है बच्चे को ये मैंने आज दिन के खा के खाने की वो पानी करा के वो तो उधर बनल इतना काम करके समय परेशानी उठबे नहीं करे एक समय जैसे जहाँ जना खर्चे हम छिनो हो जाए खा ले छै तेना रहिए आज तो महीना हो रहा है दो खाना से खाने ये सब खाना की जरूरत पड़ेगी खाना बनवे सवेरे नहीं उठे जल्दी तो बन मैं नहीं उठ तो कौन सी क्या नारे से कोई सब दिन छोटका सा मुर्गी सब आई कैन के तो सब आई कैन सास के बात नहीं तो अपना जे जरूरी करते हैं वो जितना सकता है ओकरा तो सीखो तो सीख ले तो सीखे नहीं चाहिए आई के पास सुने ना देंगे हैं हाँ कभी कभी तो बीमार रहते हैं उधर रात में मौसम खाली है किसी को भी कराने के लिए ये तो नहीं कर रहा है आई के साथ नहीं आती दोनों बार का खा कर दरार नहीं है जरा से कर लीजिए दरार की मेरा बेटा उसके साथ साले होते हैं चार किया बच्चा को गए दूध नहीं दूध ला हमें लेने लेने से साथ में ले लिया दूध
गया के दूध का साथ लिया तो प्रार्थना आधार पर दूध लग जाता है राइट में गया के दूध और मास्टर मत खराब कर दिया थे मास्टर का काम कितने पैसे बढ़िया जाके मास्टर का काम कितने पैसे बढ़िया जाके है क्यों से किया जाता है छह सात आठ नौ को आप क्या करते हैं काम पर कार्य के पहले यार सौ का मेरे के लिए इसको सारा दिन से जाने आप जैसी परीक्षा हुई है अरे तो
राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। 1 घंटा राधे राधे। कल शाम में लाइव नहीं चला है क्या आप लक्ष्मण भाई? 1 घंटा पूरा हो गया। कल तो आप नहीं मिले थे हमको, कल लाइव नहीं चला है शायद। आप मुझे पिन पर रख देना, पिन पर नहीं रखते हो मुझे, और ज्वाइन करती हूँ तो वापस नहीं करता है, कोई वापस नहीं करता है। तो क्या करें? आप खाली कहते हो ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, सभी को ज्वाइन करती हूँ, इतना ज्वाइनिंग हो गया है, वापस कोई नहीं करता। मैं वॉच कर दूंगी आपको। ज्वाइनिंग नहीं आता है, मुझे पिन पर बैठा देना, मुझे ज्वाइन करेगा तो उसको रिटर्न कर दूंगी मैं। एक घंटा हमारा टाइम दिल के इससे कहे छै।
Congress versus Tripura Congress, Governor versus Anish Kumar Singh, Sabha
ये काठमाडौँ स्ट्यान्डमा सहभागी हुन सक्ला कि स्थानीय विद्रोहीका सम्पर्क छैन अरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन 4 मा 81 भएको पक्का भएको छ सर्लाहीका काङ्ग्रेसको पुरानो जिल्ला हो तर आउँ चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसका नयाँ सभापति नेता गर्न थाहा छ अरूतर्फ विद्रोही सभाका नेता पूर्व काङ्ग्रेस सांसद अहिले राष्ट्रमा कङ्ग्रेसका अध्यक्ष कुमार सिंह भगवाननगर यसैले काठमाडौँ 4 वटा लगातार पुष्कर चुनाव जितेका नेता हुन् तर सबैभन्दा ठुलो आश्चर्य के हो काठमाडौँ जस्तो सुरक्षित क्षेत्र छोडेर उनी सहभागी छन् किन किनकि अङ्ग्रेज 40 वर्ष चुनाव जितेर शासन बनेका स्थानीय नेता तर पार्टी नेतृत्वको बीच सरकारपछि उनले काङ्ग्रेस छोडेर राष्ट्रसभामा प्रवेश गरे राष्ट्रसभाको झन्डा बालनी र रवि सुशान्तको प्रभावले नेपाली राजनीतिमा हल्लाइदिए उनको विवादास्पद बयानले झन् आगो नै थपेको छ पालित प्रधानमन्त्री सबै आत्महत्या गरेको भनेको अब यहाँ प्रश्न उठ्छ बाहिरबाट आएर रोमन थापाले स्थानीय कोमा जित्न सक्ला स्थानीय नेता अमृत श्रीलासले बढी खबर देखाउँछ आफ्नो विचार र समाधान काङ्ग्रेस भर्सेस पूर्व काङ्ग्रेस गगननगर भर्सेस अमृत कुमार सिंह सबलाई चार के काठमाडौँको स्टार नेता ये अरब रुपियाँ पैसाको अपहरण गरेर प्रमाणित देश उहाँले भन्नुभयो मैले तिर्दै गरेको छ मैले नै लोन माग्नका लागि मैले निवेदन दिएर ऋण मागेको प्रमाण तपाईँलाई साबित गर्नु के भनेको रवि नारायण थापाले सहकारीबाट पैसा दिएको ऋण लिएको जे जे दिएको भन्ने कुरो कुनै पनि छैन त्यो कुरा अरब रुपियाँ पैसाको अपहरण गरेको प्रमाण देश उहाँले भन्नुभयो मैले तिर्दै गरेको छ सरकारको विरुद्धमा सरकारको
काङ्ग्रेसका नेपाली एमाले जबरजस्ती देशमा उत्तेजना फैलाउने कामको नेतृत्व गरेको दावी गरेका छन्। काङ्ग्रेसका गगन थापाले एमाले जबरजस्ती देशमा उत्तेजना फैलाउने आदमी ukraina का घेरने रहे हो
लालू जी आप ही काहे नहीं बना दिए चारा खाने से कहा फुर्सत मिलता था। लालू जी सुना रविवार हाट मारा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी राष्ट्रवाद आगामी विकासका स्पष्ट रोडम्याप ल्याएको सरकार बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ परिचालन छ। विशेष गरी मोदी मानिसहरू पाएका बुद्ध धर्मसित नयाँ शक्तिहरूको ध्रुवीकरण तीव्र गरेको छ, जसको पछिल्लो पढेको रूपमा मालिक सहरको पार्टी प्रदेशलाई ल्याइएको छ। पार्टीलाई वरिष्ठ नेताको पदमा थाबी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि राष्ट्रवादी देशव्यापी चुनावी अभियानमा जोडिएको छ। पार्टीका दुई प्रमुख नेताहरू मोदी र मालेकको चुनावी निकै रोचक देखिएको छ। जनकपुरको पहिलो सभामा एकैसाथ देखिएका यी दुई नेता प्रेसका कुनै पनि कार्यक्रममा समेत देखिएका छैनन्। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष त के छ भने कतिपय अवस्थामा उनीहरू एकै जिल्लामा हुँदा पनि फरक फरक कार्यक्रममा व्यस्त देखिएका छन्। रवि मानिसहरूले चितवन काठमाडौँ कपिलवस्तु र लुम्बिनी प्रमाण सुनानी रहेका छन् भने मालिकहरू पछिल्लो केही दिनका सोही क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन्। त्यो पनि एकै दिन। रवि मानिसहरूले काठमाडौँ कपिलवस्तु र लुम्बिनीका बाह्र जिल्लाहरूमा एक प्रमाण सुनानी रहेका छन् भने मालिकहरू पछिल्लो केही दिनका सोही क्षेत्रमा विभिन्न जिल्लामा आफ्नो अभियान चलाइरहेका छन्। त्यो पनि एउटै दलका शीर्ष नेतृत्वले एकै जिल्लामा हुँदा सबै संयुक्त कार्यक्रम नगर्नुले राष्ट्रको विरुद्धमा अनेकौं प्रश्न र मौजहरूमा उठाएको छ। संयुक्त रूपमा मत खान नगरे पनि कुनै नेताको प्रचार गर्ने शैलीमा रवि एखन छै अध्यक्ष पद के त बालन भ गेलै रवि के किछ नै भेलै वो देख नै पाएल वो प्रकट आधार पर पार्टी के देख प्रधानमंत्री चुनाव के आएगा डिग्री में सरकार का मुख्य यो शैलीले जनतासँग छिटो र कदमसित जोडिन मद्दत पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ। तर अर्कोतर्फ कुनै जनता राष्ट्रिय समाधान राज्य एजेन्डा प्रस्तुत नगर्नुको राष्ट्रका लागि आलोचना बढिरहेको छ। दलित छात्रावासमा मात्र उम्मेदवारी देशव्यापी आन्दोलन तीव्र भइरहेका छन्। पूर्वमा काङ्ग्रेस मतदाताको मञ्च प्रयास गरिरहेका छन्। अहिले उनी खण्डपुर र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा केन्द्रित अभियानमा रहेका छन्। राष्ट्रवादी विकासलाई निकै महत्त्व दिए पनि जनतामा छाड्ने खोज देखेका स्पष्ट राजनैतिक सिद्धान्त र भविष्यको रोडम्याप बुझाउन नसक्दा आकर्षण बिना आलोचित पनि भइरहेको छ। मुख्य निकालने चाहिए पार्टी के कार्यकर्ते निकालने पता नहीं क्या घोषणा पत्र बंगलादेशमा बिहिबार सम्पन्न संसदीय निर्वाचनको नतिजाले देशको राजनीतिलाई दक्षिणपन्थी धारमा मोडिदिएको छ। शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लीगलाई प्रतिबन्ध लगाएर मैदान खाली गरेको यस चुनावमा बंगलादेश नेशनलिस्ट बीएनपीले 2/3 बहुमतको आँकडा पाएको छ। यो सँगै बीएनपी नेतृत्वमा सरकार
Yeah. Selalu kau sini baik. Jadi, jangan kasih pada aku mah. Iya. Dari jaket semua dari sini. Boleh. Boleh. Kalian mahal hak mungkin balik mahal itu. Dia berjati yang kasih ini mengkong. Jangan dia berusia lagi ini. Sama kita. Dia komen dia lepas. Hai, saya udah komen dia lepas. Untuk itu masih itu kalau itu cuma harus siapa ini. Kalau sebenarnya ya. Dia pergi
नमस्कार। फागुन 28 को निर्वाचनका लागि अब 19 दिन बाँकी रहेको छ। निर्वाचनमा चासो, उत्सुकता र आतुरता छ मतदाताहरू। राजनैतिक दलहरूमा पनि कतिपय दलले निष्पक्षताको संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ प्रतिरक्षाको दोषो र अधिकांश दलहरू निर्वाचनका लागि उत्साहित भइरहेका छन्। यही निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा विश्वमा अन्यत्र भएका निर्वाचनका चासो र चर्चाका बीचमा बङ्गलादेशमा भएको निर्वाचन र त्यसको परिणामका विषयमा चाहिँ नेपालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। एक थरीले नयाँ विशेष गरी युवा विद्यार्थी र जेन्जीले गरेको आन्दोलनलाई यो निर्वाचनका साथ जसरी मतदानमा उनीहरू प्रतिरक्षात्मक भए त्यस्तै किसिमको आयाम नेपालमा पनि आउन सक्छ भन्ने परिदृश्यको चर्चा गरिँदाखेरि अर्को थरीले भने बङ्गलादेशको आयाम फरक हो, नेपालको आयाम फरक हो। त्यसैले यसलाई त्यो अर्थमा स्थिर गर्नु पनि हुँदैन, विश्लेषण पनि गर्नु हुँदैन। हुन पनि हो, बङ्गलादेशको आयाम फरक हो। बङ्गलादेशमा भइरहेको निर्वाचनमा सत्तासीन राजनीतिक दलकी प्रमुख जसरी अहिले भारतमा निर्वाचित छिन् उनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ र सबैभन्दा शक्तिशाली र ठुलो दल प्रतिबन्धको अवस्थामा त्यहाँ निर्वाचन भइरहेको भने त्यहाँ यसरी एकीकृत रूपमा
देशमा नयाँ राजनीतिक दल बनेर भन्दा पनि विद्यार्थीतर्फका प्रत्याशी भएकाहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी बनेका कारणले यहाँ टेक्निकल विषय र त्यहाँको विद्रोहहरूको यहाँको जस्तो विध्वंस भएर देशभरि रूपमा नरसंहार मचिएर भदौ 24 जस्तो लुटपाट आगजनी र अराजकता भएर जो चाहिँ विशेष गरी राजधानी ढाकामा केन्द्रित थियो र विद्यार्थीहरूको आन्दोलन थियो र यहाँको जस्तो एक दिन दुई दिनको होइन त्यहाँ महिनौँ लामो आन्दोलनको परिदृश्य थियो। त्यसैले त्यो आयाम फरक छ। यसलाई यो सन्दर्भलाई समेट्नका लागि बङ्गलादेशमा के भयो भन्ने विषयमा समाचार खोजौँ। विशेष गरी बङ्गलादेशमा विद्यार्थी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बीएनपीले 2/3 भन्दा बढी सिट जितेको छ। विद्यार्थी विद्रोहपछि सफाई पाएर बेलायतबाट फर्किएका बीएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान अब प्रधानमन्त्री बन्ने करिब निश्चित भएको छ। उनी पूर्व राष्ट्रपति एवं बीएनपीका संस्थापक अध्यक्ष जियाउल रहमान र पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा। बङ्गलादेशमा प्रत्यक्ष तर्फमा 300 क्षेत्रमध्ये 279 क्षेत्रमा बिहिबार मतदान भएको थियो। मतगणना सकिएको परिणाम अनुसार प्रत्यक्षतर्फ 297 क्षेत्रमा 209 सिट बीएनपी विजय भएको छ भने जमात-ए-इस्लामीले 68 सिट तथा जमातसँग तालमेल गरेको विद्यार्थी नेतृत्वको नेसनल सिटिजन पार्टी एनसीपीले 6 सिट जितेको छ। 14 सिटमा अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका छन्। जमातका प्रमुख तारिक रहमानले हार स्वीकार्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। दुई स्थानमा पनि मतगणना रोक्न अदालतले आदेश दिएको छ। एक स्थानमा उम्मेदवारहरूको निधनका कारण निर्वाचन सरेको छ भने 350 संसदमा 50 सिट महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छ। प्रत्यक्षमा दलले ल्याएको मतलाई आधार मानेर समानुपातिक रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने नीतिमा प्रावधान भएको छ। बीएनपीका अध्यक्ष रहमान ढाका 17 र बगौरा 6बाट विजयी भएका छन्। विद्यार्थी सब्सक्राइब करें ज्वाइन भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब करें जोइन होस् ताकि यहाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछ। देश विदेशका विभिन्न सबै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेट केन्द्रमै प्रस्तुत गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले के हेर्नु छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनबाट प्रतिक्रिया सुन्न नबिर्सनुहोला। समाचार सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। सबै अवधिमा हामी सबै रहनुहोला। जसले आज फागुन 2 गते भ्यालेन्टाइन डे के कसरी बनाउनु भयो भ्यालेन्टाइन डे साथै आज शनिबार पनि नमस्कार स्वागत
हामी पार्लिमेन्टमा गइसकेपछि एउटा के नेपाल संसदले गर्नका एउटा विधेयक भएको थियो तथा जुनसुकै अपराध कर्म गरेको भए पनि राजनीतिक सहमति गरेको खण्डमा उनीहरू नाम हालिदिने भनेर प्रस्ताव गरिरहेन उनीहरूले गर्ने भनेर आएको थियो होइन म यो त्यो गर्दैन उनले यहाँ रगत बग्ला हामी यो कुरा मान्न प्रयास
केन्द्रमा रहेर तालिम आशाको अनुहार भाषण धेरै ठाउँमा जनताले चाहेका सुस्त हुने विश्वास गर्न सक्ने उम्मेदवार दिएको छ। उम्मेदवार के अनुहार का कारण जिसमें ठाउँमा पनि भेट्न पाउन सक्छ भन्ने आकलन पनि छ। किनकि व्यक्ति कमजोर उम्मेदवारलाई टिकट पाइने भने जनताको भोटमा पर्नेछ। तर यता राष्ट्रलाई बहुमत संख्या नभए सरकार बन्ने छैन। पार्टीको प्रधानमन्त्री हुने चाहना चाहनु छैन। शक्तिसँग हस्तक्षेप गरी सरकारमा पुग्ने राष्ट्रका प्रमुख दल बन्नका लागि एजेन्डा र नीतिमा स्पष्ट हुनु पर्यो। अब देशव्यापी यसले पाउनेछ। घोषणा पत्रले स्पष्ट गर्नु त्यो पनि छैन भने उहाँलाई काम चाहिएको छ। सत्तामा पुग्न बित्तिकै भ्रष्टहरूलाई असल कारवाही र जेल हाल्नुहुँदैन। जनतालाई कमजोर विश्वास पार्नु नत्र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यहरूले 5 जनाले चाहे 5 दिनमै भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्ने कदमको पूर्व घोषणा जस्तो हुन्छ। किनकि हालमा भइरहेको सत्याग्रह सरकारको शैलीले पूर्व राजा जनताको सवालबाट एमालेको आमसभा हुन्छ, हजारौँ सहभागी हुन्छन्। फेरि प्रचण्डको कार्यक्रम हुन्छ, उत्तिकै सहभागी हुन्छ। कांग्रेसका प्रमुख थापाले विशेष महाधिवेशन गरे। रिपुटी बन्दको चौरी बन्यो। दुर्गा कृष्णको समर्थनमा हजारौँ सहभागी हुन्छन्। रविलामिछाने र आलु भाइले भर्दैछन्। हजारौँको सहभागिता हुन्छ। पूर्व राजा हेमन्तको शुक्रबार यस्तै भिडको राजावादीलाई शिक्षा गरे-अनुसारको सहभागिता भएन। सबैका पक्षमा देखिएको जनलहरलाई समर्थक कुनै शक्तिले हात फिराएर हिँड्नुपर्ने काम छैन भन्ने पुष्ट हुन्छ। पूर्व राजनीतिको स्वागत शिरमा स्वीकृत छ, नशाक पद्धति छ। कुनै पनि मान्छेलाई पूर्व राजा भनेको मन पर्दैन। यो परिवर्तित कायम सम्मान शुक्रबार पूर्व राजा केन्द्र शाह थिए र व्यक्तिमा होइन। पहिला लामो विषयपछि पूर्वकै छापाबाट फर्किए। छापामा काज गर्न केन्द्र शाह होइन, बालिम शाह गएका छन्। किनकि राजाले चिन्न हुन्छ देशमा राज गर्ने चलन छ। केन्द्र शाहले राज गर्न नपाएको भन्ने दुई दशक पुग्न पायो। तैपनि मानिसहरू उनकै शासनमा रहेका राजी रहेछन्। राष्ट्रपति भवन राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको गभीर पूर्व राजा केन्द्र शाहलाई स्वागत गर्न गएका समर्थक निम्ति हो। अनि यो वीरमा उक्ति लिएर उत्साहित देखिएका व्यक्ति सानो राजा कहिले पनि राजाहरूको शैलीमा एक पूर्व राजालाई गाली पुग्छन्, कहिले यहीलाई पुग्छन्, कसैले साह्रै परिवर्तन गर्छन्। विमानस्थलदेखि नेपाल निवासीमा स्वागत गर्ने बहुत सहभागिता देखियो। यसपल्ट फागुन 21 चुनाव छ। राप्रपालाई राजा बोकेर भुक्ताउनु छ। यहाँ सरकार पनि निश्चय बाधक पार्यो। यी सुमनलाई लक्षित गरी निषेधाज्ञा लगाइदियो। तैपनि सहभागी समर्थकले पूर्व राजाको घरको स्वागत गरे। कसरी त्यसको व्यवस्था भन्ने हामी आफूले गर्ने कसरी लालसा राखेको हामीको काम मायाले होइन। देश अब खराबी वस्तु राजा जब कुनै पनि छैन होइन सबसँग निक्लेर विकास गरेर यो देश भन्न पनि नपर्छ। त्यो भएर हामीले राजा हजुरबाबुका नाममा रहेको विमानस्थलमा गाडीलाई चेक गरियो। गाउँघरको विमानस्थलको कामबाट 2006 देखि नागरिक उड्डयन सेवा सुरु भए पनि त्यसै
Hare Ram, Hare Hare. Radhe, Radhe, Radhe.
सिस्टर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत बहुत स्वागत है मेरी लाइव स्ट्रीम में सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़। सुदीक्षा क्या खतरी सिस्टर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ सिस्टर, ज्वाइन करें प्लीज़, हेल्प में। कैसे हो सिस्टर, कहाँ से हो, प्लीज़ कमेंट करें। बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरी लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप आई मेरी लाइव में। राधे राधे सिस्टर, राधे राधे सिस्टर, राधे राधे सिस्टर। चल गई क्या, कमेंट करें सिस्टर प्लीज, लाइक करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज 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 हेल्प मी सिस्टर।